So, so seeing Prahlad Maharaj such an exalted consciousness, fearlessness, all his friends were attracted. So they understood that this person is not something artificial. This person have very auspicious quality. They could understand. Demons also accept that they are demon. Correct? चोर भी अपने आप को चोर मानता है, बाकी लोगों को अच्छा समझता है कि नहीं? थोड़ा ऑनेस्टी तो रहता ही सबके अंदर. So they could understand this person is very special. So then they asked question to Prahlad. Where you have learned all these things? You are son of Hiranyakashipu, and from your childhood only you are in our college, Demons College. कहाँ से आपने सीखा है? Then he said that in the womb, माँ के गर्भ में. जब मैं माँ के गर्भ में था, तब मेरे पिता हिरण्यकशिपु कड़ी तपस्या करने के लिए हिमालय में गए थे. और उस समय का फायदा उठाकर देवता लोग मेरे माँ को किडनैप करके लेके जा रहे थे. तब उस समय नारद मुनि, जिनका कोई मैटेरियल ऑब्लिगेशन नहीं है, who is free to move one universe to another universe to preach the glories of the Supreme Personality. That is actually liberation. When you are free to move to one place to another place. When you will be free? When you are depending on Krishna. Other people have to stay in one place and work under someone. The pure devotees, they are free. That is called freedom. So, pure devotees are directly under the Supreme Lord. So, and therefore, they are not obliged to work under someone of this material world. They work for Krishna. Like Prabhupada was traveling. प्रभुपाद के पास कुछ पैसा नहीं था, फिर भी किसी के अंदर काम नहीं किया. क्या किए? भगवान की गुणगान किए. और उससे क्या हुआ? इससे इतना बड़ा एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस खड़ा हो गया. और लाखों करोड़ों लोग भगवान की आश्रय ले रहे हैं, भगवान के प्रसाद खा रहे हैं मुफ्त में. कोई सपना नहीं. So, तो तब नारद मुनि देवता को कहा, कह रहे आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के पत्नी को किडनैप करना, ये तो देवता का लक्षण नहीं है, ये अपराध है. बोले नहीं, इनके ये हिरण्यकशिपु का पत्नी है. हिरण्यकशिपु महा असुर है, और असुर के बेटा असुर बनेगा. तो इसके गर्भ में असुर के बीज है, और जो हमारे विनाश या दुख का कारण है, तो हम लोग उसको विनाश करना चाहते हैं. जब भी कैदू बच्चा पैदा करेगी, तभी हम लोग उनको हरे कृष्णा करते हैं. तब नारद मुनि was त्रिकालज्ञ. Narad Muni says actually you are wrong. This son in the womb of Kayadu going to become the greatest devotee in the history. And then got surprised.
मैं पहले बताया था दूसरे लेक्चर में कैसे प्रहलाद असुर के पुत्र होने के बाद भी महान भक्त किस लिए बना, उसमें नारद मुनि का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि टॉपिक डिफरेंट है। तो बहुत सुंदर पास टाइम है। तो and he is going to change the whole demoniac race, demoniac kingdom. So leave him. So then all the demigods they become very happy and they offer pranam to Kayadu, the circumambulated Kayadu, because the great devotee is going to appear. See, the great devotee is greater than demigods. Great devotee, generally we offer respect to demigods, but we don't respect to the devotees. So the devotees are greater than demigods, because the demigod position is a material position, and as soon as your the lifespan gets over, then they have to fall down from the heavenly planet and take birth in the earthly planet. But the devotee's position is eternal. भक्तों की पोजीशन जो है वो शाश्वत है। भक्त लोग भगवान के प्रिय होते हैं, शुद्ध भक्त लोग। देवता लोग भी भक्त हैं, लेकिन देवता लोग शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद देवता से भी श्रेष्ठ है। तो देवता लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो and then my mother was taken by Narad Muni to his ashram, and my mother stayed with many great personalities in the ashram, and he heard every day Srimad Bhagavatam from great devotees Narad Muni. And by his mercy, by hearing from Narad Muni, I became devotee Prahlad. I heard whatever I realized, whatever I am speaking, I have heard from great devotee, associate of the Lord, Narad Muni. So within the womb also, the embryo, उसका कॉन्शियसनेस रहता है। 3 महीने के बाद चेतना आ जाता है। तो इसलिए गर्भ अवस्था में अगर स्त्रियां भगवान की कथा श्रवण करती हैं या भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करती हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करती हैं, तो वो जो बच्चा पैदा होंगे वो भगवान के भक्त पैदा होंगे। नहीं तो सब असुर पैदा होंगे, और हो रहा है। असुर से पूरे समाज भर रहा है, और असुर से समाज भरेगा तो क्या होगा? पूरे समाज में अशांति फैल जाएगा, और वही चीज हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज को पूछा उनके फ्रेंड्स लोगों ने, दोस्त लोगों ने, आपने क्या सीखा, थोड़ा बताइए। माँ के गर्भ में रहकर आपने क्या सीखा? कि अगर आप रात को ठीक से टाइम से नहीं सोओगे तो इधर क्लास में आके सो जाओगे, क्योंकि हमने रात को जागे रहे ना 1 बजे 2 बजे तक, और फिर सुबह ड्यूटी जब फोन करते हैं उठो मम्मी को बनाना है, फिर नींद आएगा, और बाकी दिन भी सुबह आप लोग सोए रहोगे, चैंटिंग नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं टाइम नहीं है जब करने का। एक्चुअली टाइम तो 24 आवर्स सबके लिए ही है। डिवोटी लोग सुबह उठ के जप भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट टाइम। क्योंकि उनको पता है मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, समय बहुत
इसलिए हमें भक्ति करके भगवान धाम जाना है, इसलिए सुबह उठ के जप करना है, और बाकी समय पड़ा हुआ है हमारे पढ़ाई के लिए। रात्रि में कौन जागते हैं? नाम बोलिए 2-3। रात्रि में कौन जगे रहते हैं? असुर लोग एक्चुअली रात में जगे रहते हैं। और जितने भी चूहा, बिल्ली, ये सब रात में जगे रहते हैं। तो इसलिए दिन में जगे रहिए। दिन में जगे रहिए, रात को नहीं, रात सोने के लिए। ओके, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? मेरे पीछे पीछे बोलिए। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मन्यते। Translation: One should always remember the supreme personality of Godhead, Hari, in his localized representation as a Paramatma, who is situated in the core of every living entity's heart. Thus, one should offer respect to every living entity according to that living entity's position or manifestation. So, Hari Sarva Bhuteshu Bhagavan Asta Ishvara. So, Hari, who is Ishvara, the Supreme Personality of Godhead, and where he stays? He is situated in the heart of every living entity as a Paramatma. And he is having his own abode. उनकी धाम है, भगवान उनके धाम में रहते, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में, और भगवान इस भौतिक जगत में सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज is saying that Hari is situated in everyone's heart and therefore he should be always remembered. One should always remember the Supreme Person of Godhead, Shri Hari, because he is staying in everyone's heart. As soon as Paramatma leaves the soul, Paramatma leaves the heart, the body cannot do anything. There is two souls. One is like the living soul, another is super soul. And the living soul is completely under the control of super soul. Paramatma Bhagavan jabe habe antar dhyan. तो परमात्मा भगवान जब शरीर छोड़ के चला जाता है, और एक लाइन है इसमें, देहो भस्मो ऐसे कृमि कीट ऐसा बोला गया. The body become the food of the insect. Body become the food of the insect as soon as Paramatma leaves. So therefore Paramatma is the ultimate reality. The Hari is the ultimate reality. He is the absolute truth. He is the soul of the existence. Like body, there is a soul. But the soul of the soul is Paramatma. Similarly, the whole universe is moving because the Supreme Lord is situated in the center of the universe. His name is Garbha Dakshayi Vishnu, जो ब्रह्मांड के गर्भ में रहते हैं. उनका और एक नाम है संकर्षण.
and from him the law of gravitation comes. Madhyaparshan. See how the word is matching. Sankarshan se Madhyaparshan. So Sankarshan have unlimited potency. He is the Lord of the universe. He is situated in the center of the universe. Because just like जैसे अब पानी में कोई जिंदा व्यक्ति क्या होता है, पानी में तैरता है, मुर्दा व्यक्ति डूब जाता है कि नहीं? क्यों जिंदा व्यक्ति तैरता है? क्योंकि आत्मा उसके अंदर है, आत्मा शरीर को लाइट करता है। उसी प्रकार यूनिवर्स इतना भारी है, पूरे महाशून्य में तैर रहा है। क्यों? Because गर्भदक्षाई विष्णु is in the center of the universe. So we see the universe, but we are not able to see the Lord of the universe, and thus we are blind. जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, क्या करके घर को देखते हैं और किसको याद करते हैं? घर का मालिक है कि नहीं? घर का मालिक को याद करते हैं। वो एटलीस्ट वो समझ जा सकते कोई बुद्धि है। लेकिन अगर कोई किसी के घर पे जाता है या किसी बिल्डिंग को देखता है, किसी बिल्डिंग को देखते हैं हम क्या याद करते हैं? इनका घर है। Similarly, the universe belongs to the Lord. This body belongs to Paramatma. Everything belongs to Paramatma, the Supreme Lord Hari. But in ignorance, we think that everything belongs to us, and we are the master. So therefore, Prahlad Maharaj is saying that one should always remember the Supreme Personal Godhead Hari in his localized representation of Paramatma as Paramatma, who is situated in the core of every living entity's heart. Thus, one should offer respect to every living entity according to that living entity's position and manifestation. So because Paramatma is situated in everyone's heart, therefore everyone is equal. Because Paramatma is situated in everyone's heart, and therefore everyone is you can say everyone is son or part and parcel of God. Correct? Or everyone is children of God. And thus there is everybody, there is one Father, and all of us, we are son of one Father. And therefore everybody should be respected. Because Paramatma is situated in everyone's heart, therefore everybody should be respected. And thus there will be no enmity. There will be no enmity. So material world, people are under the influence of envy. Envy. And that envy is manifested in friends and enemy form. We consider someone our friend and we consider someone as our enemy. That is the manifestation of envy. ईर्ष्या का लक्षण। और इस प्रकार इस पूरी दुनिया में हर जगह में एकदम नीचे के स्तर से शुरू कर एकदम हायर प्लेटफॉर्म, द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में everybody is under influence of envy. So in the family, the two brothers, they envy each other. Or the neighbors, they envy each other. जमीन लेके कितना लड़ाई हो जाता है, एक दूसरे को खून कर देते हैं. Then in the office, the colleagues, they envy each other. Or
the superiors, at the subordinate, there is envy. And then go more higher, the different company have envy, different political party they have envy, different क्या कहते हैं क्रिकेट टीम they have envy, अभी हुआ envy, विराट कोहली and so and then different country have envy. So this is the nature of the material world. Everybody under the influence of envy, friend and enemy. So Prahlad Maharaj is saying, thus one should respect every living entity according to that living entity's position and manifestation. तो हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए उनके पोजीशन के अनुसार, उनके जो अभी वर्तमान स्थिति है उनके अनुसार उनको सम्मान करना चाहिए. सम्मान सबको करना चाहिए लेकिन उनके पोजीशन के अनुसार सम्मान करना चाहिए. तो अभी सम्मान कैसे कर सकते हैं? When will you able to respect? When you are able to recognize that the Paramatma or the Hari is situated in everyone's heart, and thus everyone is equal. In the spiritual platform, everybody is equal, and therefore there is no envy. So the demon's nature is to envy the demigods. Demon's nature is to envy the demigods. Hiranyakashipu is envious of Lord Vishnu, and all demoniac citizens, they are also thinking in a demoniac way to the demigods, those who are actually in favor of the Supreme Lord, who is the owner, the master, or the Lord of entire existence. So therefore Prahlad is saying that why you are envious? Why you are envious? The Supreme Lord Shri Hari is situated in everyone's heart. Ours also, yours also. So therefore don't feel envy. Cut down your envy. So the next verse Prahlad Maharaj is saying, by this activity as mentioned above, matlab previous verse which we have discussed, one is able to cut down the influence of enemy, namely lust, anger, greed, illusion, madness, jealousy, and when thus situated, one can render service to the Lord. In this way, one is surely attained the platform of loving service to the Supreme Personality of Godhead. So when we understand that Sri Hari is situated in everyone's heart, then we will be able to see everyone in equal vision. Pandita Samadarshina. Bhagavad Gita Krishna says. So जिनका actually knowledge है वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं. और इसलिए जो बाहरी जो अलग अलग प्रकार के जो सबका क्या कहते हैं सबका जो प्रकाश है या फॉर्म है वो एक्सटर्नल है, लेकिन असल में सभी आत्मा है, भगवान के अंश हैं, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा है. और भौतिक जगत के स्वभाव के अनुसार उनके पिछले जीवन के कर्म के अनुसार लोग अलग अलग गुण से पैदा हुए हैं. कोई असुर, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, गुण के अनुसार. कोई धनी, कोई दरिद्र, कोई इंडियन, कोई अमेरिकन. तो ये एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है.
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन जो हमेशा परिवर्तनशील है, लेकिन जो शाश्वत पोजीशन है, इटर्नल पोजीशन, दैट इज वी आर सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज. So when we are able to understand that, then we are able to see everyone in equal vision. We think everyone is my friend. तब हम लोग सबको अपना मित्र समझते हैं. तो बहुत बार बोलते हैं लोग, हम लोगों को क्यों आते हैं क्लास के लिए बुलाने के लिए? जरूर उनका कोई स्वार्थ होगा. हम लोग तो क्लास में आना नहीं चाहते. क्यों हम लोग को बुलाने के लिए आते? Why the devotee goes out? Because they think that everyone is our friend, and therefore they want to share this most sublime knowledge, like Prahlad is sharing. So devotee have no personal benefit. They are already benefited. They are taking benefit by practicing spiritual life. They want to share the benefit because they consider everyone. Because it is not just consideration; it is a fact. It's a fact that we are son of one father. तो इसलिए भक्त लोग इस ईर्ष्या से या शत्रु मित्र भाव जो है, जो ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, ये मेरे शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन है. जो मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद करता है वो मेरा मित्र है, गठबंधन बन जाता है. और जो मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में मदद नहीं करता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है. हम लोग दुश्मन मन में उनको दुश्मन इसलिए बोला गया दुश्मन, मन में दुश्मन बना लेते हैं. तो अभी प्रहलाद महाराज कह रहे, जब तक ये सारे शत्रु, ईर्ष्या, क्रोध, काम हमारे हृदय में रहेगा, तब तक हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे. तो प्रहलाद महाराज डीमंस फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि बाय दिस एक्टिविटी, बाय recognizing the position of the Supreme Lord who is situated in everyone's heart, and by taking shelter of him, by respecting everyone, we can cut down the envy, lust, jealousy, anger, and thus situated one can render devotional service. In this way one is surely attain the platform of loving service of the Supreme Personality of Godhead. So we cannot develop loving service to the Supreme Personality of Godhead unless we become free from all this enemy, all this demoniac quality. And how we can free from all this demoniac quality? When we can see the Supreme Lord, his position, and when we can see the Supreme Lord in everyone's heart. Next verse. Nishamya karmani gunan atulyan. Very, very inspiring verse. Nishamya karmani gunan atulyan. Viryani lila tanubhi kritani. Lila tanubhi kritani. जद अतिशरा उत्पुलका अश्रु जदिष्ठिता जद अतिशरा उत्पुलका अश्रु गदगदाम. बोल पाएंगे? प्रत्कंठा उद्गदन्ति रोति नेत्रांति. So the translation is,
one who is situated in the devotional service is certainly the controller of the senses, and thus he is a liberated person. Person who is thus free from all this demoniac quality and thus situated in the service of the Lord, he is liberated person. When such a liberated person, the pure devotee, hear the transcendental quality and activities of the Lord's incarnation for the performance of various pastimes, his hair stand on end on his body. Tears fall from his eyes, and his spiritual realization, his voice falters. Sometimes he is openly dances, sometimes he sings loudly, sometimes he cries. Thus he expresses his transcendental jubilation. So you can see that how like Prahlad Maharaj is saying stage by stage. Prahlad Maharaj is saying first you see that how Supreme Lord Shri Hari is situated in everyone's heart, and therefore you always remember him. And because he is free, he is situated in everyone's heart, give up enmity. Give up enmity. And not just enmity and all other demoniac quality which is there in our heart. Lust, greed, anger. And when you become free from all this, then only you can be situated in the loving service of the Supreme Personality of Godhead. So when you practice spiritual life, then demoniac quality gradually goes away from our heart, and then we become situated in the devotional service of the Lord. Now, person who is situated in the devotional service of the Lord and thus become free from all the demoniac quality, he is a liberated person. Liberated soul. So, conditioned soul, liberated soul. We have discussed the 3C. Conditioned soul, liberated soul. Conditioned soul is servant of lust, greed, anger, envy. He is in the cycle of birth and death. The liberated soul is free from all this like anarthas or impurities of the heart, and thus, though he is situated staying in the material world, he is actually liberated. So, such liberated soul, when they hear वीर्यानि लीला तनुभीर कृतानि, वीर्यानि मतलब भगवान की वीर्यवती लीला, भगवान के वीर्यवती लीला का जब श्रवण करते हैं तब क्या होता है? उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है. तो पुलक, उनके शरीर में पुलक होता है, रोमांच होता है, उनके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. देन गदगदानी गदगदाम, उनके जो वचन है, कथा है, वो गदगद शब्द इस प्रेम से गदगदानी. प्रोक्त कंठ उद्गयंती, उद्गयंती मतलब वो जोर से गाने लगते हैं. बहुत बार हम लोग डिवोटीज को देखते हैं, लोग भक्ति में इतने डूबे हुए रहते हैं, उनको पता नहीं कि आसपास में क्या है, लेकिन वो गाने लगते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये प्रेम की लक्षण है. और रोती, कभी वो प्रेम से रोता है. भौतिक जगत में भी लोग रो रहे हैं, किसके लिए? रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, उसके लिए ब्रेकअप हो गया, या पैसा चोरी हो गया, या ऑफिस में प्रॉब्लम, पत्नी के साथ झमेला. So if you don't cry for Krishna, you have to cry for material problem. So roti and nrityati, नाचने लगते हैं. So thus
Prahlad Maharaj is teaching that why you are wasting your life by envying the demigods. Actually, they are our friend only, because we are one son of, we are same son of one father. Why you are wasting your life and suffering? So these friends, they are able to understand, because he was speaking with realization and logic. ऐसे ऊपर से सेंटिमेंटली नहीं बोल रहे, बहुत स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, and with his great faith and realization, he is speaking. So Prahlad was want to explain that why you are suffering and fighting with the demigods, envying the Supreme Lord Hari. You can experience great transcendental pleasure, great jubilation by practicing devotional service. So one more important, Prabhupada is writing, fools and rascals who are not in the transcendental position consider this uncommon activity of the Lord to be mythological. But when a pure devotee, the liberated person, hears about these uncommon activities of the Lord, he immediately becomes ecstatic and exhibit the symptom of chanting, dancing, crying very loudly and jubilantly. This is the difference between devotee and non-devotee. Non-devotee सोचता है ये सब क्या कर रहा है इधर वॉइस में जाकर, हम लोग कितना IPL देख रहे हैं, मजा नहीं ले पा रहे हैं. But actually that activities is in envy. आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी टीम को ईर्ष्या कर रहे हैं, और उधर कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसके साथ आपका लाइफ का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है. लड़ रहा है वो और तुम इधर सोच रहा मेरा टीम है. एक्चुअली कृष्ण मेरा है, बिकॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, and Krishna is situated in everyone's heart, and everything belongs to Krishna. But when we forget Krishna's position, remove Krishna from the picture, then immediately envy comes, शत्रु मित्र आ जाता है. ये पूरी दुनिया उसके अधीन है, लेकिन जब भी भगवान केंद्र में आ जाएगा सारी ईर्ष्या खत्म हो जाएगा. इसको कहते संकीर्तन. श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया को एक कर दिया. कैसे? कुछ तो पैसा नहीं था उनके पास, कैसे एक कर दिया? क्योंकि उनके पास कृष्ण था. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो अगर आप कृष्ण नाम का कीर्तन करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की शरण लेंगे, तब आप भी इस ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, और आप भी दूसरे को अपना मित्र या अपना समझने लगेंगे. दूसरे के हितैषी, शुभ चिंतक, वेलविशर बन जाएंगे, और फिर आप दूसरे को कृष्ण की आश्रय प्रदान कर पाएंगे. और ऐसे जीवन में आप हमेशा आनंदित रहेंगे जब आप खुद कृष्ण भक्ति करेंगे और दूसरे को कृष्ण भक्ति, कृष्ण से जोड़ेंगे. हमेशा आनंदित रहेंगे, बिकॉज कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमेशा नृत्य करते हैं, रोते हैं और नाचने लगते हैं. तो भक्त लोग जो इस ईर्ष्या और अज्ञान से मुक्त हैं, वो इस प्रकार दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं. लेकिन जो अज्ञान में है, ईर्ष्या और देश के द्वारा प्रभावित हैं, शरीर के स्तर पर हैं, वो सोचता है ये सब माइथोलॉजी है. समझ में आ रहा है? शायद रेडी When a devotee becomes like a person
लास्ट वर्स। The real problem of life, so Prahlad is speaking to his demoniac friends. The real problem of life is repetition of birth and death, which is like a wheel rolling repeatedly up and down. This wheel, however, completely stops when one is in touch with the Supreme Personality of Godhead. In other words, the transcendental bliss realized from the constant engagement in devotional service, one is completely liberated from the material existence. All learned men knows this, and therefore, my dear friends, O sons of Ashura, immediately began meditating upon the worship of the and worshipping the super soul within everyone's heart. So the real problem of life is repetition of birth. ऐसे नहीं कि आप पहली बार इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पहले भी आप इंजीनियरिंग किए हैं, पहले भी आप जॉब लगाने के लिए कड़ी संघर्ष किए हैं, और जॉब कभी लगाया है और कभी फेल भी किया होगा। पहले भी आपने IIT JEE का प्रिपरेशन किया है। तो ऐसे नहीं कि आप पहली बार एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये आपको पहली बार पता चला, नहीं, पहले भी ऐसे बहुत सारे जन्म हमें मिल चुका है, और हम लोग इस कड़ी संघर्ष में किए हैं। उसके बाद जॉब मिलने के बाद फिर कड़ी संघर्ष वर्किंग लाइफ में, बहुत ज्यादा समस्या है और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, लेकिन कोई खुश नहीं। उसके बाद बुढ़ापा, बीमारी लगा है, और फिर से वही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर से वही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यही असली प्रॉब्लम है और ये नया प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अरे कितना बार सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी हम लोग इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान की शरण नहीं लेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इस कड़ी संघर्ष में, इस दुख मय जीवन में, जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग भटकते रहेंगे। The real problems of life is repetition of birth and death, which is like a wheel rolling repeatedly up and down. कभी उच्च लोक में जाएंगे, देवता के शरीर प्राप्त होगा, गंधर्व का शरीर प्राप्त होगा, या दूसरे किसी शरीर प्राप्त होगा। कभी नीचे जाएंगे, असुरों का शरीर, पशु का शरीर, पेड़ पौधे, कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। इस प्रकार अलग अलग शरीर में दंड भोगते रहेंगे, और हम लोग सोच रहे हैं नया प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर देंगे तो लाइफ सक्सेसफुल। अरे कितना बार सॉल्व कर चुके हैं, करके आए हैं। सपोज आपको बोला जाए नहीं, फर्स्ट ईयर में ही रह जाओ, हर बार फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम देते रहो, कैसा लगेगा? क्या है इसको, बोरिंग है कि नहीं? तो हम लोगों को भी बोरिंग लगेगा, या लग रहा है, क्यों? क्योंकि सेम रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, सेम चीज। समझ में आ रहा है? तो इसलिए माया हमें बुद्ध बना रही है, या भौतिक जगत की जो तथाकथित शिक्षा है, जो केवल हमें आहार निद्रा भय मैथुन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिखाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना नहीं सिखाता है। ऐसे तथाकथित जो शिक्षा है, केवल जो हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सिखाता है, नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट मेक्स अस फूल
and we keep solving the same problem. तो इसलिए rolling up and down, the wheel however completely stop, लेकिन उसको stop कर सकते completely. How? When one is in touch with the Supreme Personality of Godhead. जब कोई व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान के संस्पर्श में रहता है. In other words, the transcendental bliss realized constant engagement in devotional service. दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति हमेशा दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है. कैसे? भगवान के कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस. भगवान के हमेशा भगवान की सेवा में नियुक्त होने के द्वारा. One is completely liberated from the material existence. और इस प्रकार एक व्यक्ति इस भौतिक जगत के सभी दुखों से, भौतिक जगत के प्रभाव से, 3 गुणों के प्रभाव से, कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे. जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे कि मेरे प्रिय असुर मित्रगण, इस प्रकार ईर्ष्यामय जीवन परित्याग करके जब भगवान से ईर्ष्या करेंगे सभी से ईर्ष्या होगा. जब भगवान से मैत्री करेंगे सब लोग मैत्र बन जाएंगे. So this is the factor. Lord is the factor. He is the center point. And when you leave the Lord, everything goes upside down. So therefore it's very important that we practice Krishna consciousness very intelligently. We become very convinced that why Krishna consciousness is absolute truth. Why Krishna consciousness is the ultimate or prime duty of our life. Or why the practice of Krishna consciousness is life in knowledge. And thus, we have to be very seriously practice Krishna consciousness in every day, in our day-to-day life. Otherwise, there is no neutral position. We are already living like asuras, and college atmosphere make us go intensified more. And more will suffer. So therefore it is very important that along with your studies, make Krishna consciousness make Krishna consciousness your prime duty. It is our prime duty. So this Sunday morning program or the voice classes, it is a staircase. It is a staircase to come to that liberated platform. So Prahlad Maharaj, by the preaching of Prahlad Maharaj, all demons' friends become devotee. Can you imagine? One person changed the whole college. So similarly, we see that Srila Prabhupada and one person from Bengal, from this land, Calcutta. See the potency of the land. All of you came from other state, in the state of Srila Prabhupada, where Srila Prabhupada was born, and you have been given this opportunity to practice Krishna consciousness. Such a great charity Srila Prabhupada have done. Who have done? Anybody? Such a great exalted life, full of pure values. People are living so low class way. The Krishna consciousness is adding the values. Mineral water में लेते हैं क्या added value क्या लिखा रहता है? Added minerals. So Krishna consciousness is adding the values, adding purity, adding the highest perfection of life. So therefore take this Krishna consciousness seriously. And when you take Krishna consciousness seriously, all other material duty will be performed much better way. So you can be first class devotee and you can be first class student. When you take this study as your service to Krishna, then it becomes very important. There is
quote written there. क्या लिखा है पढ़ो? For devotee studies their service to Krishna. As Arjuna performed his duty of fighting responsibly for the pleasure of Krishna. Similarly, student devotees should also study their academics responsibly to serve Krishna better. So when you become devotee of Krishna, then you don't make your life as a play. बाहर के दुनिया में लोग अपना लाइफ से खेल रहे हैं, जो इच्छा वो कर रहे हैं. They don't know that there is supreme authority, and they're just doing all sinful activities because they don't know the Supreme Lord is there. Human life is very much important. As soon as you understand the Supreme Lord is there, and I am part and parcel of the Supreme, I am accountable. Immediately you become responsible. And when you become devotee, you do everything very seriously because you gave up all nonsense activities. Whatever you have, everything is important. So therefore, practice Krishna consciousness seriously. Take especially like for us, like if you take care of your morning time in Krishna consciousness, then you become very nicely, strongly situated in Krishna consciousness. Whole day you can remember Krishna. Just like Prahlad Maharaj is saying here. Morning time if you give for Krishna, then whole day you can remember Krishna. And you can perform all the different services, your studies, remembering Krishna. But if that morning time goes in ignorance, in sleep, and night time all nonsense activities, then whole day also will be passed in nonsense activities or unutilized way. Even you do it, you will not be able to do it very nicely. एक चीज करने में बहुत टाइम लगेगा, या करेंगे भी तो घुसेगा नहीं अंदर. But you practice Krishna consciousness very nicely, your intelligence becomes very sharp because you already understand the goal of life, and then your study also will be better. Shri Prahlad Maharaj ki jai, Nrsimhadev Bhagavan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Any announcement, Akshay Group?